स्क्रीन डिस्प्ले करो, दोबारा मीटिंग ओवर हो गया था, अब जल्दी सर स्टार्ट करो। सर स्क्रीन स्टार्ट कर दो। स्क्रीन डिस्प्ले कर दो पहले। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हुआ मेरे पास। शो योर ओके स्क्रीन। सर। कि जो एडिशनल फोर्स होती है हमारे टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्बिट होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है? एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी ओमेगा स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, देन इक्वेशन ऑफ मोशन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगी, इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो क्या होगी, एफ प्लस माइनस वी ई इक्वल्स टू एम आर ओमेगा प्लस डी ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू हमें पता है, हमने पहले फाइंड आउट की थी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। वीई भी क्या होता है, वीई आर ओमेगा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा प्लस डी ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम साइड चेंज कर देंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, एम आर ओमेगा प्लस डी ओमेगा होल स्क्वायर को, और बीई आर ओमेगा को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे जब हम, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर से एम आर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 एम आर ओमेगा डी ओमेगा माइनस एम आर डी ओमेगा होल स्क्वायर प्लस माइनस बी ई आर ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, डी ओमेगा की वैल्यू हमारी स्मॉल है, ठीक है, तो डी ओमेगा होल स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 2 एम आर डी ओमेगा प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ई आर ओमेगा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी ई अपॉन 2m, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन और एक्सिलरेशन, ठीक है। बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वी 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओमेगा हमें पता है 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, तो न्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी ओमेगा हमारा 2 पाई न्यू के इक्वल था, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई डीवी, ठीक है, स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास डी न्यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बीई अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। तो इक्वेशन फोर्थ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसके बाद सिंस v इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, dv इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है हमने इसको। तो इस वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको सॉल्व आउट कर हमारे पास, Inderjit, sorry to interrupt you. Try to mention d nu. You are using a frequency that nu is the symbol of frequency, not v, right? Try to correct your notation, right? Start your presentation. ओके सर। तो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी ई अपॉन 4 पाई एम लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी। तो हमारी इक्वेशन 5 क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी वेवलेंथ में चेंज कितना हुआ, जीमन शिफ्ट कितना हुआ स्पेक्ट्रल लाइन में, ठीक है। ये हमने किसके लिए फाइंड आउट किया, जो हमारे ओरिजिनल लाइन के साइड पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर कंपोनेंट, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन थी वो स्प्लिट हुई थी ना 3 कंपोनेंट में, जो लेफ्ट और राइट साइड पर आए थे उसमें कितनी वेवलेंथ में उनकी चेंज हुआ, उसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ E अपॉन m गिवन बाय इक्वेशन 5, हम इक्वेशन 5 से E अपॉन m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या है, E अपॉन m इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 पाई C अपॉन B लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है।
तो E अपॉन m की वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1.77 इंटू 10⁻10 EMU पर ग्राम, ठीक है, डिटरमिन्ड बाय J.J. थॉमसन। References Dinesh textbook of quantum physics, second internet sources. Thank you. So now presentation is open for questioning. If you have any question, then you can ask Inderjit. Sometimes Nikhil will be writing the spread, Nikhil. You can ask even one question, basic question. Lots of questions are there in this presentation. इंद्रजीत कौर, Yes. मैं क्वेश्चन भूल गया। वैसे फोर्थ स्लाइड खोलना, फोर्थ स्लाइड में था एक क्वेश्चन मेरा। Fourth. कौन सी स्लाइड पे? फोर्थ या फिफ्थ थी slide. शायद। Fourth number slide. फोर्थ। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे आगे एनालॉस। आगे आगे There ये is राहुल व्हेन ये सेवंथ। क्या क्वेश्चन है? ये जो थर्ड पॉइंट है ना, व्हेन वन कंपोनेंट इज दिस, एक सेकंड। हाँ, ये हाँ, क्या सेकंड, जो क्वेश्चन है? सेकंड पॉइंट है, थ्री कंपोनेंट्स कैसे ऑब्जर्व होते हैं, वो नहीं मुझे समझ लगा। अच्छा, जब हम ना मैं डायग्राम निकाल कर बताती हूँ। इसमें देखो, जो फर्स्ट डायग्राम है ना, ठीक है, हमारी जो यस। स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रही है ना, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर वाला बिल्कुल नीचे आ रहा है ओरिजिनल लाइन के, इसकी जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी ये सेम रहती है, ठीक है। और जो हमारे दो साइड पर है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज आता है, जो हमने आगे फाइंड आउट किया है। ओके ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन था ना? यस यस। ठीक है। Inderjit, may I ask lots of questions from your presentation? Yes, sir. So you can ask. Okay, thank you. So first, my first question is, what do you mean by this is a basic question. Of course, I know, and you also know. But, just for the completion, for the betterment of your presentation, for future prospect, I am asking some basic question. What do you mean by a spectrum? So spectrum. Yes, a spectrum. सर, जब हम ना व्हाइट लाइट को भी प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, है ना? Yes. तो वो 7 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। आई थिंक उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना सर? अच्छा, चलिए। Next question is, why you are using a spectrometer? जो स्पेक्ट्रोमीटर की जो हमारी है ना जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है वो कंपोनेंट में स्प्लिट होगी, ठीक है। तो हम उसको मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसके लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब और कोई डिवाइस होता है स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए, कि हम केवल स्पेक्ट्रोमीटर से ही अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं? इतनी डिवाइस और डिवाइस तो होता है टेलीस्कोप, पर उससे शायद इसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते टेलीस्कोप से नहीं कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीमन शिफ्ट? सर, जीमन शिफ्ट क्या होता है इसमें ना सर, इसमें जो हमारी लाइन होती है, जब हम किसी भी एटम को है ना मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं, ठीक है,
या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसमें हम एटम को लेकर आते हैं, तो वो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाती है इन इट्स कंपोनेंट। सो उसी को कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इट्स कंपोनेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। I'm asking Zeeman shift, not Zeeman effect. Of course, you have explained very well Zeeman effect or various types of Zeeman effect. I'm asking Zeeman shift. सर जीमन शिफ्ट होता है चेंज इन वेवलेंथ। Change in wavelength. That यस means, सर। you're trying to explain that whenever we apply magnetic field, there is a change in wavelength, or you can say frequency of the spectrum, right? यस And that change in frequency or wavelength, that is called Zeeman shift, that you have calculated and represented your last slide in your presentation. Right, Inderjit, very well you have presented your presentation, right, and explained very well. So, Mr. Nikhil, you can start your presentation. Good morning to everyone. My name is Nikhil Kumar. Today I am going to present my PowerPoint presentation on the topic Bohr's model of atom and excitation and ionization potential. I prepared this topic under the guidance of Dr. Sanjay Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Physics, SDT College, Karnataka. Let's start. Bohr's model of atom. First of all, its origin in 1930. Niels Bohr proposed a theory of atomic structure by obtaining the essential features for planetary model and utilizing Planck's quantum theory. नील बोहर ने जो थ्योरी प्रपोज की एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी दोनों को यूटिलाइज किया। रदरफोर्ड ने बेसिकली एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियस को, और बोहर ने एक्सप्लेन किया फिर इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी लेवल्स। Now postulates. First postulate of Bohr. Atom consists of a central massive and positively charged core called nucleus. The electron revolve around the nucleus in circular orbits. The Coulomb's force between the nucleus and electron provide necessary centripetal force to the electrons to move in a circular path. Now next postulate. The only permissible orbits for the electrons are those for which the angular momentum of the electron is equal to an integral of h upon 2 pi. In other words, only those orbits are possible for which the angular momentum of electron is equal to an integral multiple of h upon 2 pi. इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ओनली उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम है जो वो h अपॉन 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे शो किया हुआ है एंगुलर मोमेंटम n into h अपॉन 2 पाई, mvr इज एंगुलर मोमेंटम l, h अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है h कट, और यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 into 10 raised to power minus 34 joules। और यहाँ पे these orbits are called stationary orbits। जिन orbits में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें stationary orbits कहते हैं। An electron moving in one of these stationary orbits do not radiate any energy. Thus, permissible orbits are non-radiating paths of electron। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं
वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करते, कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते, जो भी परमिसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from orbit of higher energy to lower energy in the form of photon, the energy in the form of photon is emitted which is equal to the difference of energies of orbit। जैसे कि लेकिन जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, ये मान लिया E2, ये E1, यहाँ से जब लोअर एनर्जी में आएगा तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा वो इक्वल टू होगी हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। यहाँ पे दिया हुआ है h nu is equal to E2 minus E1। This is the Bohr's frequency condition। Now here we can see En dash minus En double dash is equal to h, यहाँ पे शो किया गया है। Now we are going to discuss excitation and ionization potential। First of all, we have to discuss what is excitation and what is ionization। Then we can easily explain the excitation potential and ionization potential। सबसे पहले हम देखेंगे excitation क्या होता है। It is the movement of an electron from a lower energy level to higher energy level by absorbing energy। It makes an atom to move from ground state to an excited state। ये क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसे एक्साइटेशन कहते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, जब इसे एनर्जी प्रोवाइड की गई तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्साइटेशन। यहाँ पे एक्साइटेशन जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइट हो गया, हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। नाउ आयनाइजेशन, it is the process in which an electron is given enough energy to break away from an atom। कि हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो एटम में से बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं आयनाइजेशन। Now we can easily explain what is ionization and excitation potential। तो एक्साइटेशन करवाने के लिए जो पोटेंशियल जरूरी है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया, और जो आयनाइजेशन करवाने के लिए जरूरी है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। Now energy of nth state of hydrogen atom is given by En is equals to minus 30.6 electron volt upon n square using this formula। So energy required to excite the electron from ground state to the first higher state। अगर हम ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी से प्रोवाइड करती है, En2 माइनस En1। यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रखेंगे, n1 की जगह पे 1 और n2 की जगह पे 2 रखेंगे, तो इसे कैलकुलेट करके आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hence excitation potential of hydrogen atom is 10.2 electron volt। Now here absorption, emission, ionization, all things are represented। ये absorption दिखाई गई है, emission दिखाई गई है, ionization दिखाई गई है। Now energy required to ionize, मतलब कि हमें आयोनाइज करना है कोई इलेक्ट्रॉन तो हमें उसे कितनी एनर्जी देनी है। तो हमने n1 मतलब कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो n इन्फिनिटी हो जाएगी, n इन्फिनिटी, तो हम n2 की जगह पे इन्फिनिटी रख देंगे, n1 की जगह पे n2 की जगह पे n1 की जगह पे 1 और n2 की जगह पे
potential of hydrogen atom is 13.6 volt. References: Modern Quantum Physics by Ashok Sharma and A.S. Vasudeva. Internet resources. Acknowledgement. I would like to express my special thanks of gratitude to my physics teacher, Dr. Sanjay Kumar Singh, who gave me the golden opportunity to do this presentation and also provide support in completing it. So now this presentation is open for questioning. Ask any question related to this Bohr's model of atom and excitation and action potentials and addition energy, right? I have two or three questions, Mr. Nikhil. First question: please explain stationary orbits in detail. What do you mean by stationary orbits? सर जो नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट्स होती हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं. No, there is another question. What is non-radiative orbit? Next question is my non-radiative orbit. जी सर. The next question is non-radiative orbit. What is non-radiative orbit? The stationary orbits. Try to explain in detail. सर नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट्स वो होती हैं जिसमें कोई भी एनर्जी या रेडिएशन एमिट नहीं होती. जैसे अगर एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, रेडिएशन तभी एमिट होगी अगर वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा. तो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो नहीं करेगा एमिट. So, what is the necessary condition for stationary orbits? सर उसका एंगुलर मोमेंटम एन h/2π के इक्वल होना चाहिए. Okay. If the angular momentum of an electron in an orbit satisfies the condition that should be an integral multiple of h/2π, then that orbit is known as this stationary orbit, right? If this condition is not satisfied, in that case, we cannot say that orbit is permissible orbit for the motion of the electrons, or that is not a stationary orbit, right? So we have mentioned that excitation energy for electron from ground state to excited state of hydrogen atom is 10.2 electron volt, right? And potential is 10.2 volt. So what is the basic difference between these two things? What is the basic difference between excitation potential and excitation energy? Of course, you have explained in a very good manner that what is the excitation potential and excitation energy, right? My interest is to know what is the basic difference between these two physical quantities. Then explain on the basis of that mathematical relation between energy and potential. Is there any relation between energy and potential? So on the basis of that things, you can explain the basic difference between this excitation potential and excitation energy. Energy is equals to charge potential. Yes, sir.
Now show me your next slide. Just 15th or 14th. Show me 15th slide number. I think 15th, 14th. There is any error in your mathematical representation. 14th, show me 14th. सर ये 14th है. Before 12th number slide. Go to 9th or 10th, I think. 9th or 10th. So this 11th, no. 9th number slide. ये 9th Or 7th number slide. I think there may be a error in excite that ionization energy. Show me the expression for ionization energy. Here you have calculated ionization energy. Okay. So here you have mentioned that E is equal to E infinity minus E and 1. Right. In the next step, you have mentioned that minus 13.6 upon infinity square. Right. But this will give you okay. This is the first term value. Okay. No problem. You have mentioned here the negative sign. Okay. That is good. Okay, your presentation was good. Now we are compiling this presentation session. Thank you so much, everyone.